So वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दिया है f of x is sin x plus a times e power x plus b times e power minus x plus c times log 1 plus x by x cube and limit x tends to 0 plus f of x अगर फाइनाइट है तो a plus b plus c का वैल्यू क्या है। लिमिट x tends to 0 plus f of x if it is equal to L then लिमिट का वैल्यू क्या है। ठीक है, लिमिट फाइनाइट होने के लिए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। इफ लिमिट एग्जिस्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट लिमिट एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ a b c फाउंड अबव फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x into f of x। ठीक, so now let us go about doing this problem. So this is based on the concept of expansions। आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग फंक्शंस हैं। So what I do is I'll try to convert every function into a polynomial expansion. So the polynomial by polynomial आएगा। As limit x tends to 0, f of x exist होने के लिए the statement that I use is only the least power of x matters. When x is tending to 0, only the least power of x matters when you find the limit. So let me do the analysis. So limit x tends to 0 plus f of x जो है नीचे x क्यूब है। लेट मी राइट द एक्सपेंशंस। साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। आई डोंट रियली रिक्वायर द रिमेनिंग टर्म्स प्लस a इंटू e पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। That is the expansion of e power x. I'll write only up to x cube क्योंकि denominator में x cube है। I don't need any higher powers than x cube in the numerator. Plus b into e power minus x का expansion 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial so on. Plus c times log 1 plus x का expansion x minus x square by 2 plus x cube by 3 so on। ठीक है, so that is equal to limit x tends to 0 plus, so let me collect the similar powers of x। ठीक है, so first what is the constant term in this expansion। इसमें सारे x के साथ है। you have a here and b here, so a plus b is a constant। इसके बाद x के साथ आपको कौन कौन सा कोएफिशिएंट्स है। यह x के साथ 1 है। यू हैव a with x here, you have minus b with x here and you have c with x, so that's the coefficient of x। x square के साथ कोएफिशिएंट क्या है। there is no x square term here। यह a by 2 factorial is 2 plus b by 2 एक्स स्क्वायर के साथ है माइनस सी बाई 2 प्लस एक्स क्यूब के साथ क्या है। एक्स क्यूब के साथ यहां माइनस 1 बाई 6, यहां प्लस a बाई 6 माइनस b बाई 6 प्लस c बाई 3 प्लस सो ऑन। द रिमेनिंग टर्म्स आर इररिलेवेंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। Now for this limit to be finitely defined, denominator में least power of x is x cube, numerator में भी least power of x has to be x cube। इसका मतलब x cube से छोटा पावर्स का कोएफिशिएंट सारे 0 होना चाहिए, then only this limit is finitely defined। So this implies a plus b 0 होना चाहिए, a minus b plus c should be equal to minus 1 and a plus b minus c by 2 should be equal to 0। So these are the three equations that I have। ठीक है, so यहां से a plus b is equal to c, a plus b is equal to 0, so a plus b 0 है, so c has to be equal to 0। this implies c is equal to 0। so अगर c 0 है तो a plus b is equal to 0 and a minus b is equal to minus 1
So a is equal to minus b. So 2a is equal to minus 1. A is equal to minus 1 by 2. And this implies b is equal to plus 1 by 2. So you got the values of a, b and c. Okay. So now the first question. If limit x tends to 0 f of x is finite, what is the value of a plus b plus c? So a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आ गया. So आपको a plus b plus c कितना आ रहा है? 0. So the first answer is 0. First question का आंसर 0. इसके बाद for these values of a, b, c, what is the value of the limit? So अब a, b, c ये तीनों substitute किया तो this term is 0, this term is 0, this term is 0. So what is the value of the limit? Just the ratio of these coefficients. x cube के साथ यहाँ ये वाला कोएफिशिएंट है, by x cube cancel हो जाएगा. So this will be the value of the limit. So let me say L is equal to minus 1 by 6 plus a minus b by 6. A minus b is minus 1. So plus minus 1 by 6 again. C is already 0 है, so C 0 हो जाएगा. So minus 1 by 6 minus 1 by 6 is minus 2 by 6, that is minus 1 by 3. So the value of limit is minus 1 by 3. Clear? Now, third question में, for the values of a, b, c that we have found out, what is the value of limit x tends to 0 plus x into f of x? अगर इसी f of x को x से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है. So what will be the terms? यहाँ x एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x क्यूब हो जाएगा, यहाँ x पावर 4 हो जाएगा. So you can see that the coefficient of x cube has become 0. So x cube by x cube cancel करने के बाद, so what is the value of the limit? The value of the limit is nothing but the coefficient of x cube, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए already. So x cube का term भी 0 हो गया x into f of x किया तो. Hence, the value of limit is equal to 0. So these are the three answers for this question. Thank you.